Hello guys, it's a weekend, so नींद आ नहीं रही थी and I was like phone पे doom scroll करने से अच्छा let's record a story time video. अभी reading करने का मन नहीं कर रहा था, so why not? So this is a story around my old workplace. So what happens basically, I had switched to a different company. It's, I guess, a year or maybe more earlier. So what happens basically is I go for the interview and it goes well and I crack job and they're like, okay, so these are the job responsibilities. Um, you can say the role. No, the role was technical content writer. You can say, yeah, content writer or content writer. So I was like, okay, and what will be the working days? How many holidays? That's what I would be asking, right? Typical questions and stuff like that. So, suppose we decided that my salary would be an X amount, maybe for example, 10,000 or 15,000 a month. Okay, so I was like, okay, fine. And then they go, we also want you to do the sales part. And I was really upfront about it that I can't do sales. I don't have any interest in doing sales and I just can't do it. Okay. So they were like, no, no, but like how you explained in interview just now, I really liked it. You have to do it just like that. Or you can just initiate it with the client. And after that, I'll or the any other employee will manage it. If you can't do it, but we'll try it. And based on that, uh, your salary will be decided. Then, for example, if you also do this sales role, you will get the salary of that role as well, and you will also get commissions as well. I was like, okay, if you want to try, it's fine, but my priority is not that. Because I was like, मेरे को तो पता मन में भी हो रहा है वैसे भी कि it's just I कि अपने को पता है अब से नहीं हो पाएगा, so why waste someone else's resources or time or commit something जो मैं नहीं कर सकता. So I was like, okay, चलो ठीक है. तो they're like, okay, fine, when you can join and all that stuff. I was like, ठीक है, तारीख को कर लेंगे and all that. फिर मैंने resignation दे दिया and then I end up joining that organization. Okay. So फिर क्या होता है, मैं जाता हूँ and everything is chill, चल रहा है and all that stuff. कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहा है. कुछ दिन बीत जाते हैं. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, इट वॉज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सो ऐसी कोई कंपनी बहुत बड़ी नहीं थी. सो ही कॉल्स मी, ही इज़ लाइक, ओके सो कैसा लग रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट. आई एम लाइक, यस सर. सो इज़ लाइक, आप अपनी कंपनी समझो एंड what are some ideas we should do, we need more engagement for our own page as well to promote our company. Think of it as your own company and do work accordingly. I initially thought, at that moment only I thought that, man, this is going to be something suspicious only, because जब आप सुनते हो अपनी कंपनी है, यू गेट एन आइडिया ना कि वो अपनी कंपनी तो नहीं समझते, दे जस्ट वांट मोर वर्क आउट ऑफ यू and pay you less or something more weird or something like that. But anyways, coming back to it, so I was like, okay sir, sure, अब क्या कहता नहीं. Okay sir, all right. And then we would have, basically I would have a little kind of a separate meeting with the manager, where she'll be like, okay, so how or what ideas or how should we market our page, our company's page, company's social, you can say. So I was like,
I didn't say anything out of the extraordinary, because when I had checked their page, they didn't had a lot of following. I guess less than 100 or maybe 100 followers, not really that. So I was like, first of all, we should make some trends, you know, recreate some trends, focus on creating more reels. That definitely. What else can a person like it? The most basic part is start making reels or social media posts. That's the start of it. Nah, they are not. They were not even that active on that. So I was like, we should start posting more, or we can do tech recap or businesses recap, something around that, or some marketing recap where a brand did this type of marketing and it went viral for what reasons, some analysis of some kind. Okay, I really like analysis related stuff, so more than content writing really. But anyways, so I was like, okay, okay. She was like, okay, give me more concrete ideas and then we'll move forward accordingly. And because the company was small as well, and ultimately, even the company's owner is also saying, ki bhai, aap or do and all that. So even I was like, ki bhi, because they only had right one editor, video editor. I was like, you need to hire more staff as well. Okay, if you really want to do your socials much better, because they were more focused on serving the clients or more on the back end side. वहाँ पर ज़्यादा employees थे उनके वहाँ तो सही सही मतलब amount of employees थे, but for more marketing side इतने employees नहीं थे. So they were like, oh, okay, we'll see. So then, so they were like, okay, we'll see and we'll try to आप शुरू करो and all that. Well, obviously लिखना शुरू करो and all that. मैं लिखता था और ऐसे ही हम थोड़ा करते जा रहे थे. Days went by, I guess. 15 दिन चले गए, 20 दिन चले गए, a month went by, and ठीक है, ऐसा कोई मैं ये नहीं कह रहा था, सब चला गया, सैलरी भी आ रही थी. तो ऐसे ही 1 1.5 महीना, आई गेस 1 महीना होने के बाद, वन 1 month 10 days और 15 days के बाद क्या होता है कि आई वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ग्रो नहीं हो रहा एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज अल्टीमेटली उसमें भी ये था दैट आई एम बेसिकली राइटिंग स्क्रिप्ट, मैं तो रील बना नहीं रहा. तो आई वाज लाइक, you guys have not created two, like if you created like 2 or 3 reels, that's not really my fault, right? अगर मैंने 10 रील का कंटेंट लिख दिया है तो वो तो आपको ही करना, बनाना तो आपको ही पड़ेगा ना. एंड देर देर हैज़ टू, एज अ राइटर, देर इज़ ओनली अ लिमिट. आई एम नॉट सेइंग लिमिट, तो ऑफ कोर्स अब पूरा फुल फ्लैश ही लिख के दे रहा था मैं, बट एक लिमिट तक ही आप लिख सकते हो, थोड़ा तो आपको इम्प्रूव भी करना ही पड़ता है ना ऑन द स्पॉट. बट स्टिल मैं लिख ही देता था, ऐसा कोई वो नहीं है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, राइट? सो आई वाज लाइक, ठीक है चल रहा है तो कोई नहीं. बट बेस कमिंग बैक टू इट, तो क्या होता है कि सडनली मैं देखता हूँ कि ना थोड़ा बिहेवियर में चेंज आ रहा है मैनेजर के, यू नो, इट मतलब सटनली, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सटल चेंजेस हैं, बट यू सी कि भाई वो ज़्यादा इंगेज तो कर रही है, काम वाम तो निकालने में तो भाई लोग माहिर ही होते हैं कॉर्पोरेट वाले. बट दे आर लाइक, देर इज़ दैट थिंग कि भाई कुछ अनश्योर सा मुझे लग रहा था कि भाई कुछ पंगा होने वाला है. बेसिकली ये फीलिंग है, इंट्यूशन, वॉट एवर, यही जो है कि उस बिहेवियर में थोड़ा सा अनईजीनेस सा आप कह सकते हो. उसके बिहेवियर में से कोई ख़राब नहीं था, बट थोड़ा सा लग रहा था कुछ मुझे. एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा, बट एनीवेज. तो फिर क्या होता है, 1 महीना 15 दिन बताया था मैंने, तो ऑलमोस्ट आई गेस 5 या 6 दिन, नहीं हाँ 5 या 10 दिन बाद मैं रात को घर आता हूँ काम से. ठीक है, तो मैं अपना ग्रॉसरी व्रॉसरी लेने चला जाता हूँ घर के लिए. वही अपना घर, दूध मम्मी ने कहा है भैया दूध वूध लाना है, ब्रेड व्रेड लानी है, ले आता हूँ. तो मैं अब ग्रॉसरी स्टोर में ही होता हूँ, अभी बाकी थोड़ा बहुत और भी घर का सामान लेना था.
तो मैं वहीं खड़ा होता हूँ, तो एकदम से, और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, बिकॉज कई बार क्या बीच में स्पैम्स वगैरह कॉल्स बहुत आने लगे थे, सो आई वाज लाइक it gets very irritating at times. So I was just listening to music and I had put on my phone on silent. So फ़ोन मेरी जेब में था और मैं सामान ले रहा था, सामान वामान ले लिया एंड ऑल दैट स्टफ हो गया बिलिंग करने के लिए। फिर मैं जब पेमेंट के लिए फ़ोन निकाला, देन आई सॉ अ मिस्ड कॉल फ्रॉम माई मैनेजर एंड आई वाज लाइक अरे अभी क्यों कॉल कर रहे हैं, लाइक इट वाज लाइक 8:30, no, 9:30, 9:30 और मे बी इवन लेटर, 9:30, 9:45। एंड मेरा पहला इंस्टेंट था कि भाई क्या हो गया, ठीक है भाई इंसान सही है कि नहीं, अब इतनी रैंडमली कोई मिला रहा है। आई वाज लाइक भाई क्या पता ऐसे कोई हमारा, बिकॉज इतना कोई हमारा आउटसाइड कम्युनिकेशन नहीं था, या वो यूजुअली वर्क रिलेटेड स्टफ ही व्हाट्सअप होता है, बट स्टिल मैंने कहा भाई गया पता गलती से अपना ही नंबर पहले हो और इमरजेंसी में हो। आई गेस 10-15-20 मिनट हो गए होंगे कॉल आए हुए, तो आई वाज लाइक अरे क्या हो गया, बट बिजनेस रिलेटेड कोई भाई काम ख़राब हो गया, कोई अर्जेंट काम है क्या है, काम रिलेटेड तो मुझे पहले नहीं आया था ऑनेस्टली। तो उसके बाद मैं कॉल बैक करता हूँ, तो कॉल लगता ही नहीं है, तो फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद कॉल दोबारा करता हूँ और रिंग जारी होती है एंड कट कर देते हैं, मतलब उठाते नहीं है फ़ोन। मैं नॉर्मल भी कॉल करता हूँ, कट कर देते हैं, 2-4 बार ही होता है, फिर मैं तंग आ जाता हूँ, लाइक अब क्या करें, ठीक है। फिर मेरा ख्याल अराउंड हाफ एन आवर लेटर, मतलब अगर ये हम कहानी बता रहा हूँ मैं अगर 9:30 की, तो लाइक 10:30 के अराउंड आता है मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे कि आप जो है ना, बेसिकली क्या द थिंग वाज दैट आई हैड क्रिएटेड अ सेपरेट गूगल अकाउंट, नहीं गूगल अकाउंट नहीं, गूगल ड्राइव, उस पर मैं कंटेंट डालता रहता था कि भाई ये है, और उसका एक्सेस तो था मैनेजर के पास भी, बट आई गेस वो नहीं कर पा रही होंगी ना, क्यों नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता, होगा लॉग आउट हो गए क्या है, वैसे कोई लॉजिकल तो मुझे रीजनिंग नहीं पता, बट एनीवेज। तो अरे ये क्या हो गया, लाइट नहीं दिख रही, सॉरी, हाँ, तो वेयर वाज आई, हाँ, तो उसका मुझे मैसेज आता है दैट आप ना काम शेयर करो अपने अब तक जो किया है, वो खुद भी रोज़ मैं रिपोर्ट वगैरह तो भेज ही रहा हूँ, बट एक ड्राइव पे डालता था, सो दे एंड आई वाज लाइक ओके, तो मैंने, मेरे पास था, मैंने शेयर कर दिया। देन 5-10 मिनट्स बाद शी रिप्लाइज दैट करण, द बॉस और सर, शी ही जो भी है, द मैनेजर बेसिकली सेड कि बॉस कह रहे हैं कि वी कैन ओनली पे यू फॉर, वी कैन ओनली पे यू दिस मच, है ना। बेसिकली अगर जैसे कि आई सेड बिफोर कि जैसे कि अगर 15,000 फॉर वन रोल है एंड 15,000 फॉर अनदर रोल है, तो 30,000 हो गया, अलग कम, यू नो दैट होल कमीशन एंड ऑल एस्पेक्ट, वो तो अलग ही हो गया ना। सो दे वर लाइक वी कैन ओनली पे यू 15,000 बट यू हैव टू डू बोथ। आई वाज लाइक ये क्या है, बिकॉज मेरा तो दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं था। सो आई वाज लाइक ये कैसी मतलब बात कर रहे हो आप, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सही से कर रहा हूँ, यू शुड हैव जस्ट सेड इट बिफोर ना, ये मैं ऐसे कैसे मैनेज करूँगा मैं, अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि भाई आपने पहले कुछ बोल दिया ना, ऑल दैट, नहीं 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 मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा या तो 15,000 है अमाउंट है, और मतलब जो एक्स अमाउंट है उसमें आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एंड आई वाज लाइक shit, like this is happening over a WhatsApp text messages, not even in a proper real office, and I was like shit। तो फिर उसके बाद मैंने फिर वो कहती कि भाई ठीक है सोच लो एंड लेट मी नो, आई वाज लाइक तो फिर मैं तो नहीं कर सकता, एंड शी वाज लाइक ओके ठीक है देन,
कोई उन्होंने कोई ऐसा लैपटॉप वगैरह भी नहीं दिया था, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम माई ओन लैपटॉप ओनली। तो वो भी फिर कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, सैलरी सैलरी का भी एक पंगा था। बट इससे पहले आप और स्ट्रेस हुए, मैं इसमें एक और कंक्लूजन बताना चाहूँगा दैट लकीली आई हैड अनदर ऑफर इन हैंड विच आई हैड रिजेक्टेड। तो मैंने उन्हें रीच आउट किया, दूसरी कंपनी को, एंड दे वर काइंड इनफ that they were like, oh, of course we'll give you another opportunity, that's all right. So it was like I had passed round one, but because I had received this job, so I informed the HR that I would no longer be moving forward to the next round. और luckily उन्होंने किसी को hire नहीं किया था they liked me in the first round itself, that they wanted to hire me. मतलब the HR said कि आपका ये तो एक मतलब more of a formality था, they we really liked you in the first round itself and we wanted to hire you. So they hired me and everything went well on that part. And then what happened is kind of hilarious. The first company that I was talking you about, the manager reaches out to me after like a couple of days, like 15 days or 20 days later, ki if you want we have another posting and stuff like that. And I was like, thank you for this opportunity but I'm not interested. And then she had the guts to literally write in the message, well, if budget is an issue you can let me know. I was like, seriously, you couldn't even pay me properly for like more than a month, and now you're saying if budget is an issue let me know. I mean, seriously, what is this? Anyways, next thing was the salary for that 15 days, 15 or 20 days, whatever. So उसमें क्या होता है basically she would just start whenever that first of all though मैंने रीच आउट करा, वो तो उसने तो डिडंट बॉदर कि भाई सैलरी भी पे कर देनी चाहिए, इंसान ने काम किया है. बट एंड देन दे वर लाइक ओके आई विल लेट यू नो, अभी मैं तो हम काउंट कर लेंगे अभी सैलरी एंड ऑल कर देंगे. एंड देन क्या हुआ कि दे समझो जैसे कि आई वर्कड देयर फॉर 20 days, सो I took a leave for, I took one leave, okay. So apart from that मैं properly time से गया and all that. In fact the most funny part about this is that I was probably one of the first few employees that actually reached on time. The manager and a lot of other people would come on later, like if the office timing is like 10 or 10:30 ish, so they would reach like 11:30. And then they had the guts to message me that you have taken like 4 half-day leaves, so we'll just settle accordingly. And I was like, I didn't take any half-day leaves. And then I was like, oh, she was like, okay, I have to cross-check it and all that stuff. And then she was like, no, you have taken, you reached late. I guess I did, not guess, I did reach late a little bit. Like, if the timing is 10:30, I reached like 10:45. Sometimes the metro is a little, gets stuck, or there is a little delay, और मैं थोड़ा 10 minute late उठा और stuff like that, तो उसकी वजह से. But I was like, the mall is chill. If another person is coming like 1 hour later, तो अपना तो 10 minute चलता ही है ना. But no, they counted it as half day. Later I was thinking कि भाई कहाँ join कर लिया, और उसके बाद half day कटना था. I would have gone at 1.5 hours or 2 hours later. But anyways, फिर उसमें भी they took like another 10 or 15 days to respond. फिर उसमें भी they didn't, like, if it's a 20 days salary
और उसमें ये सब कर करके दे फिर 500 और 1000 रुपीज़ कम पड़ डिफरेंस आ रहा, 500 to 1000 के बीच में अमाउंट था। देन आई अगेन मैसेज कि ये तो इतना बन रहा है, तो आप जो है करो डिफरेंस। फिर उन्होंने करा और फिर वो आया कुछ दिन बाद। सो करते करते ऑल दिस टुक अराउंड अ मंथ। तो हाँ, आई थिंक इनिशियली मैंने बोल दिया था कि 1 साल पुरानी बात है, प्रॉब्ली इट्स नॉट 1 year old, ज़्यादा पुरानी बात है। ये तो इनिशियल फेज ऑफ माई करियर में था। सो या, दैट वॉज द स्टोरी। इसलिए ऑनेस्टली, if you have a place where the work culture is really nice, you have amazing people around, of course there is going to be some kind of politics here and there, थोड़ा biasness, तो it's human nature, sadly क्या कर सकते हैं, but appreciate it because some people don't have it. I took that for granted, and then I later realized how messed up it could be. अभी तो आई एम डूइंग मोर ऑफ अ फ्रीलांसिंग स्टफ, तो इतना नहीं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। बट एनीवेज, दैट्स ऑल। इफ़ यू एंजॉयड इट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड शेयर योर इंस्टेंसेस, एनी इंसिडेंट्स जो आपने एक्सपीरियंस करे हों, और आपने कैसे उसे ओवरकम किया। एंड दैट्स ऑल। बाय।